Hi everyone, this is Dr. Rama, and today what we are going to discuss is the basic instincts, what is there in our life, and these basic instincts are basically the instinct that has been given to us by our ancestors. हमारे ancestors 2 लाख साल पहले आए थे इस पृथ्वी पे, और इसके वजह से हमें कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स मिले हैं जो हम अपने लाइफ में अभी भी इनहेरिट किए हैं। और ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स हमारे नॉलेज या लर्निंग से नहीं आए हैं, बट इट हैज़ बीन इनहेरिटेड एंड इट लीड्स टू सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स acts that we perform nowadays. Now there are 3 basic instincts. The first basic instinct is the instinct of self-preservation. Now when we talk about self-preservation, इसका मतलब होता है कि हम preserve करते हैं अपने आप को. Now what we have 1 or 2 things. The first thing which we have is this body. So we preserve our body. We preserve the body functions. आपका चलना, आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, आपका डाइजेशन, ये सारी जो बॉडी फंक्शंस है इसको हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं. वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर माइंड, दैट इज योर थॉट प्रोसेस, एंड वी ऑल्सो ट्राई टू प्रिजर्व दिस इन्वायरमेंट, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और इस इन्वायरमेंट की सेफ्टी और आपका फिजिकल सेफ्टी ये सब हम प्रिजर्व करना चाहते हैं. तो दिस नेचर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, जिसके वजह से हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स एक्ट्स करते हैं, ये हमारा एक बेसिक इंस्टिंक्ट है. दैट बेसिक इंस्टिंक्ट इज नोन एज इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. मैनी टाइम आप लोग को ये लगेगा कि बहुत लोग, हम लोग जो आपस में रह रहे हैं यहाँ पर, मैनी ऑफ अस स्टार्ट्स सेल्फ प्रिजर्विंग आवर सेल्फ टू अ मच मोर एक्सटेंट देन अदर्स. You will find many people start indulging into the physical part of this instinct. Many of us will start overbuying things, over accumulating money so that we can have financial security for ourselves. Many of us starts getting over possessed about ourselves, and therefore these all things can lead to different type of psychological problems. सेकेंड जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, दैट इज आवर बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, दैट इज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हम कहते हैं. इस बेसिक इंस्टिंक्ट के थ्रू हम इंटीमेसी बढ़ाते हैं बाकी मेंबर्स का इस सोसाइटी में. उसके बाद हम पार्टनर्स खोजते हैं जिससे थ्रू वी कैन फर्दर कैरी ऑन आवर जनरेशन, या सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इन दिस एनवायरमेंट एंड सोसाइटी. एंड इसके इंस्टिंक्ट के वजह से भी बहुत लोग ओवर इंडल्ज होते हैं इस बेसिक इंस्टिंक्ट को लेकर, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ सेक्सुअल प्रोमिसिटी, एंड यू विल आल्सो फाइंड लॉट ऑफ थ्रिल सीकिंग बिहेवियर्स इन दिस sexual instinct use, and that is also not very correct. And the last basic instinct which we will talk about is the social instinct. So human beings are already been told as a social being, and the reason for saying so is that we want to socially interact with the community members. हम चाहते हैं कि कम्युनिटी का हम एक हिस्सा हो, क्योंकि हमारा एक नेचर होता है कि हम क्राउड्स में घूमना पसंद करते हैं, एंड देयरफॉर वी रिक्वायर सोशल रिकॉग्निशन. वी फील दैट कि पीपल शुड अप्रिशिएट अस. वी वांट गुड फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स. We want to build up a status for ourselves so that we are recognized in the society, among the peers, among the people whom within which you want to stay ahead. And therefore this property of having a social recognition comes with the help of a basic instinct that is known as a social instinct. Though many people might not be using it in a dominant way, but still this is also considered as one of the basic instinct. Now the question arises, out of these 3 basic instinct, you will find some people are using one more than the other, and therefore the dominant instinct is one. Then you have a companion instinct that is below the dominant one, and then finally the instinct which is not being used properly by any individual is known as a dormant instinct, or also a blind spot. So basically our motto should be to balance all the 3 basic instincts and their complex activities together, so that we can come up with a good personality in the environment, and we can really live a very fruitful life. So the idea of today's session was to know the 3 instincts nicely, so that we can understand which instinct is predominating in our personality, and thereafter we can take a balance of other instincts also.